Good morning, friends. Today our topic is valency. As we were discussing about the structure of atom, and we already know about the subatomic particles, and they are called as electrons, protons and neutrons. Now comes the term valency. What is valency? It is the combining power of an atom. When an atom combines with another atom, it actually holds what a combining power. It has a combining power, and it is calculated. How it is calculated, or how can we calculate the valency? For that, we calculate the number of electrons that an atom wishes to gain or lose so as to achieve its most stable electron arrangement. Valencies are used to write down the chemical formula. You just need to make it clear the electrons an atom loses or gains. This will make the valency of an atom. Fine. Now comes, what are ions? When an atom lose or gain electron, they become ions. Fine. जब भी कोई एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गॉट हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेती हूँ. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. वेन एवर इट लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. अगर लूज़ कर देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, गेन करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. वेन एवर इट इज़ इन द कंडीशन ऑफ लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स आइन. फिर ये एटम नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? आइन. हम इसे क्या कहते हैं? आइन. सो आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट नेगेटिव चार्ज. मतलब आइन हमारा तब बनता है जब उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जिस तरह कि आप सोडियम पे देख सकते हैं, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस किसी भी एटम पे होंगे तो वो आइन बन जाता है. वो फर्दर मोर हम उसे एटम नहीं कहते. Always remember there are two types of ion. First one is the cation and the other one is called as anion. Cation. What is it? Cation. Ion with the positive charge is known as the cation, and if a neutral atom, any atom, loses one or more electrons, it becomes a cation. Sodium has 11 electrons and 11 protons. As you know, number of electrons and protons are always equal. It loses its 1 electron. How many electrons are left? 10. So it has lost its 1 electron. Now the charge comes positive. And it becomes a cation. Similarly, anion, negatively charged atom, is known as ion. Negatively charged होना चाहिए. If a neutral atom gains 1 or more electrons, it becomes an anion. How? Chlorine has 17 electrons, 17 protons. But when it gains 1 more electron, it becomes 18 and the charge comes negative. The negative charge is showing that it has gained an electron. Fine. Similarly, there are monoatomic ions and polyatomic. Monoatomic ions that contain only one atom, like sodium, chlorine ion, calcium, oxygen, aluminum, nitrogen. But the polyatomic ion contains more than 2 atoms, more than 1 or 2 atoms. Like this, OH are combined, CN are combined, NH4 is combined. Fine. Okay, next the topic is law of constant composition. Okay, what is it? Law of constant composition. It explains what? Energy can neither be created nor be destroyed. And it holds what? It has the elements always combines in the same proportion with each other. This is law of constant composition. As we know, energy ना तो create होती है ना destroy होती है, बल्कि एक ही स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है. इसी तरह जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमें क्या बताता है? द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन द सेम प्रोपोर्शन विद ईच अदर. एलिमेंट्स ने हमेशा कंबाइन क्या करना है? अपने सेम प्रोपोर्शन में. ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी प्रोपोर्शन या अपनी मेजरमेंट को छोड़ दें. हाउ? जिस तरह हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ फार्मूला H2O, राइट? Water is a compound that has a formula H2O. So, how it is formed? We need 2 hydrogen and 1 oxygen. To make up the water molecule. Now, law of constant composition says elements always combines in the same proportion. If I combine only 1 hydrogen and 1 oxygen, the compound will be changed. It will no more be a water but a hydrogen peroxide. So, what you have to understand? Law of constant composition. All elements always combine in the same proportion. ठीक है? This is called as law of constant composition, and you have to give any one example. Any water molecule is always made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom in the ratio 2:1. Okay, fine. Thank you, students.